अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माहिरा खान। I'm Adnan Siddiqui. मैं हूँ आयशा उमर। मेरा नाम आमना शेख है। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अकरम। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। एजुकेशन हर बच्चे की ज़रूरत है हमारे मुल्क में। अगर हमारे बच्चे, हमारी फ्यूचर जनरेशन एजुकेट होंगी तो आगे जाके हमारा मुल्क पाकिस्तान बेहतर होगा। सो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सिटीजन फाउंडेशन पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्पेशली रिमोट एरियाज़ में। सो इस मुबारक महीने में प्लीज़ अपनी ज़कात कोशिश कीजिए सिटीजन फाउंडेशन को दें। अगर पाकिस्तान के बच्चे पढ़ेंगे, पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं अरफान, आपका मेज़बान। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। कहीं पे पढ़ा था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का एक बहुत ही फेमस कोट, इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाएं, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। वेरी इंस्पिरेशनल वर्ड्स, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देयर इज़ अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो कि बेसिक एजुकेशन से महरूम हैं। दैट्स वेयर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक TCF come into play, who are doing their part in spreading the light of wisdom in our country, Pakistan. Today we have with us Salman साहब हैं हमारे साथ, and Anika जी हैं, who are representing TCF North America together. Welcome to our YouTube channel, Into Spices, and we have recently started a new YouTube channel called Into Spices Max, where we are kind of highlighting such community issues. थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। First of all, बहुत शुक्रिया. Thank you so much for inviting us and making sure that we never lose weight in Canada. We love what you do and thank you for doing what you do. मेरा नाम सलमान हसन है। मैं TCF USA और नॉर्थ अमेरिका का मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ and I've had the honor and the opportunity of working directly with the children. और आप यकीन करें इरफान साहब कि हम सोचते हैं कि हम जाके बच्चों से मिलेंगे तो बच्चों को सिखाएंगे। It's completely the other way around. Those kids जो TCF के अभी हम आगे बात करेंगे स्कूलों में हैं, वो आपको सिखाते हैं। वाह। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। मेरा नाम है अनीका खान और मैं सलमान के साथ TCF के नॉर्थ अमेरिकन चैप्टर में काम करती हूँ। आई एम पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम एंड बहुत खुशी हुई कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके चैनल पे आ सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। It's our pleasure and thank you for giving us the time and talking to us and our lovely audience जो कि थोड़ा सा बेताब है जानने के लिए about what TCF does and what the mission is, what the values are. So, for those who are unfamiliar with TCF, let's start at the very beginning, right? What is TCF? When was it founded? And how does the North American chapter play a part in this grand scheme? So, the Citizens Foundation, इसका short form है TCF. We are the largest private network of low-fee schools in the world. And we are also the second biggest employer of women in Pakistan. The first being the government of Pakistan and the second is TCF. So what do? We build futures. We run and operate schools in Pakistan. 1995 में 5 दोस्त इकट्ठे हुए और उन्होंने सोचा कि हम इस मुल्क के लिए ऐसा क्या करें कि इस मुल्क में तब्दीली आए। घूम फिर के their answer was education. So they started what is called TCF now. When they started, their vision was that if we get to 1,000 schools, that will be superb, that will be a dream come true. And 30 years later, here we are with 2,033 schools running in Pakistan. Amazing. With 3 lakh बच्चे. जो कॉन्सेप्ट था फाउंडर्स का कि उस वक्त आपको याद होगा 90s में हालात भी सही नहीं थे मुल्क के। देयर वाज अ लॉट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन 90s में and they got together and they asked ke, I mean, do you want to be part of the problem or do you want to be part of the solution? And they researched around, and one important thing I just want to highlight here is they found out that जो health issues in Pakistan में 30% of them are because of education. So if you solve education, you can get 30% of your health bill out of the budget. So that's why they selected education. और ऐसे अनीका ने बताया कि they started 5 schools, they rated themselves, showed people how it's run. And alhamdulillah, today we are 33 schools with 2 new schools opening every week. Wow. So आप सोचे बैंक की ब्रांचें इतनी जल्दी नहीं खुलती जितनी अल्हम्दुलिल्लाह TCF के schools खुलते हैं। And how does that kind of, like the network operate and expand? Is it all through, like, I'm sure there must be other countries that are kind of, like helping out, not just North America? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। We have a global movement. TCF is an organization, but उसके पीछे एक global movement है जहाँ आप जैसे लोग
हमारी पाकिस्तानी डायस्पोरा इन नॉर्थ अमेरिका प्ले अ क्रिटिकल रोल, बिकॉज जो नॉर्थ अमेरिका में लोग आए हैं उनको पता है कि अपने एजुकेशन के बलबूते में आए हैं एंड दे वांट टू गिव बैक. सो DCF नॉर्थ अमेरिका, आंसरिंग योर क्वेश्चन, प्रोवाइड्स अ मेजॉरिटी ऑफ अ लॉट ऑफ फंडिंग टू रन दी स्कूल्स एंड ये वो पाकिस्तानी हैं जो यहाँ बैठ के मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान वापस भिजवा रहे हैं फॉर दीज चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह ही हैं. एंड इट्स रियली नाइस टू हियर बिकॉज हमारी जो ऑडियंस है वो लाइक दे कीप फाइटिंग ओवर कि भाई बन कबाब इसका अच्छा है या रोल उसका अच्छा है या बिरयानी उसकी अच्छी है, बट दिस इज रियली नाइस टू हियर कि एटलीस्ट इन वन कॉज दे ऑल कमिंग टुगेदर एंड सपोर्टिंग दिस फाउंडेशन दैट्स डूइंग अमेजिंग वर्क इन पाकिस्तान. बिल्कुल, you can get the Pakistani out of Pakistan, but the Pakistani-ness inside them stays. इसलिए हम ये बन कबाब खाते हैं और समोसे खाते हैं, and people have the need to give back to their community, and we are actually answering that need. बच्चे जो पाकिस्तान के हैं, they need TCF, but people over here are also want to give back, and they need us. So it's a win-win situation. So let's start with the vision, and I quote, to remove barriers of class and privilege, to make the citizens of Pakistan agents of positive change. Sounds really poetic. Let's unpack this a little bit. How is TCF impacting the lives over there? It's a very bold statement and it's a very big dream, but कुछ TCF में और आपको तो पता ही कुछ थोड़ा सा पागल होना पड़ता है जब आप ऐसे काम सोच रहे होते हैं. And we are alhamdulillah filled with a lot of people in the movement who are kind of पागल. Passionate, let's put it that way. Passionately पागल. Passionately पागल. पागल. जुनूनियत है उसकी. जुनूनियत है इस जुनूनियत cause है. के लिए. Let's call it that. जुनूनियत. Yeah. पहला इसको अनपैक करते हैं just for a minute to remove barriers. The thought that the founders and the movement have is कि यार एक गरीब इलाके में स्कूल गरीब नहीं होना चाहिए. तो अगर आपको और मैं आपके व्यूअर्स को भी इनवाइट करूँगा कभी पाकिस्तान जाएं या पाकिस्तान में हैं, प्लीज़ विजिट अ स्कूल. मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने पाकिस्तान में स्कूल पढ़ा था उससे बेहतर है ये स्कूल. उनकी लेबॉर्ट्रीज, उनके क्लीनलीनेस, उनके वॉशरूम्स, उनके क्लासरूम्स, एरी ब्यूटीफुल लॉन्स, हर में प्ले ग्राउंड है हर स्कूल में. अगर इलाका गरीब है तो स्कूल गरीब नहीं होना चाहिए. तो ये सब रिमूव करें बैरियर्स कि उन बच्चों को भी वही अपॉर्चुनिटी मिले. एज ऑफ नाउ हम लोग के 63,000 ग्रेजुएट्स हैं. हम लोग प्राइमरी स्कूल भी बनाते हैं, सेकेंडरी बनाते हैं, देन वी ऑल्सो सपोर्ट एंड काउंसिल देम थ्रू यूनिवर्सिटी एज वेल. अगर इम्पैक्ट की बात करें तो मैं एक स्टोरी आपके साथ ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगी. पहले आप लोग कुछ समोसा खा लें. मेरा ज़्यादा दिल बन कबाब पे है. बन कबाब प्लीज गो फॉर द बन कबाब. थैंक यू अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच. एक मैं समोसा भी ट्राई करूँगी. सो एक मैं कहानी बताना चाहती हूँ. एक इब्राहिम गोट होता है कराची में एक इलाका, एंड वहाँ एक सलीम साहब उनका नाम होता है. देयर वाज अ फादर एंड उनके 5 बच्चे थे और उनकी ख्वाहिश थी दोनों मियाँ बीवी की कि हम अपने बच्चों को तालीम दें. सो बच्चे जो उनके थे वो एक गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे वहाँ, और आपको तो पता है व्हाट द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स आर इन पाकिस्तान. एंड देन वो शाम को काम करते थे अपने अब्बा के साथ एक वायर फैक्ट्री में. एक दिन TCF उस मोहल्ले में आया इब्राहिम कोट में और उन्होंने स्कूल खोला. Like Salman just said, we don't make poor schools for these kids, we make state of the art schools. तो जब वहाँ स्कूल बन रहा था वो लोग समझे कि ये तो इतना, हम तो गवर्नमेंट स्कूल नहीं अपने आप को अफोर्ड कर सकते, सो हम ये इस स्कूल को किस तरह अफोर्ड करेंगे. बट देन जब वो स्कूल खुला और प्रिंसिपल्स और टीचर्स ने जब कैंपेनिंग शुरू की कि बच्चों को ताकि लेके आएँ स्कूल में और उनको ये इस बात की आगाही दे कि ये स्कूल एक्चुअली अफोर्डेबल है, फिर ने ये फ़ैसला किया कि वो अपने बच्चों को इन स्कूल में ट्रांसफ़र करेंगे. आज 15-20 साल बाद उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है उज़मा, वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर में डेप्यूटी डायरेक्टर है. उनके जो एक बेटे हैं वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं. उनकी एक और जो बेटी है इकरा, शी इज़ डूइंग हर PhD इन न्यूयॉर्क. Another daughter is a doctor in Florida, and उनके जो सबसे छोटे बेटे हैं यासिर, वो सिलिकॉन वैली में काम करते हैं. तो ये एक ऐसी स्टोरी है जो मेरी इट्स अ फेवरेट स्टोरी बिकॉज एक पूरी फैमिली में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है एजुकेशन से. दीज आर पीपल हु कैन नॉट इवन थिंक अबाउट स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ देयर कम्युनिटी. उनका ये माइंडसेट होता है और उस कम्युनिटी में जाना जाता है कि आप जिस सर्कमस्टांसेस में पैदा हुए हो आप उसमें ही रहोगे.
and from there on, these people are part of the society, and they are working, and they're productive individuals, and they give the community around them hope that they can come out of this cycle. तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे, आप शेल एंटर करें, आप यूनिलीवर एंटर करें, आप गवर्नमेंट ऑफिसेज एंटर करें, आप TCF के स्कूल्स में एंटर करें, आपको हर प्रोफेशनल स्पेस में, फ्रॉम टीचर्स टू प्रिंसिपल्स टू एवरीवेयर, नर्सेज एंड डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स, आपको हमारे TCF के अलमनाई नज़र आएंगे. सो चेंज की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम अ ह्यूमन लाइफ पर्सपेक्टिव लोगों की ज़िंदगियों में सिर्फ तब्दीली नहीं आई है, उनकी फैमिली लाइफ में तब्दीली आई है. मैंने आप लोगों की फुटेजेस देखी जो आप लोगों ने प्रोवाइड की. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दोज फुटेजेस विद अस. दैट विल हेल्प इन लाइक स्टिचिंग द स्टोरी फर्दर. सो व्यूअर्स, आप लोग देखिए अदनान सिद्दीकी साहब का क्या कहना है अबाउट TCF, इट्स मिशन. आप देखिए वो क्या कह रहे हैं. तब तक हम थोड़ा सा लाइक कुलाची इन की जो मेहमान नवाजी है, अगेन आई वुड लाइक टू थैंक कुलाची इन ओवर हियर फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म फॉर अस टू do this, conduct this interview. And this bun kebab is wonderful, by the way. Okay. This is so good. So मैंने रिव्यू नहीं दिया, अनीका जी ने रिव्यू दिया है. बन कबाब अगर आपको खाना है कुलाची इन पे आए. So watch अदनान सिद्दीकी साहब. Till then हम लोग थोड़ा सा बन कबाब खाते हैं. Assalamu alaikum. I'm Adnan Siddiqui, and today I'm visiting a TCF school in Ibrahim Hedri. TCF school is located in the heart of Ibrahim Hedri. Most people in the area are fishermen. अगर मैं तुमसे कहूँ कि अपनी मर्जी के इनके नाम रख दो तो इसका क्या नाम होगा? अस्सलाम वालेकुम। याद है बच्चों? Liverpool से. The school places a strong emphasis on healthy activities, encouraging students to become well-rounded individuals. कुछ समझ नहीं आया मुझको. I'm really impressed by the level of technology in the classrooms. TCF is fostering digital literacy skills from an early age. आपने किस कैंपस से पढ़ा है बेटे? आदम से. कोस्ट गार्ड. What I've witnessed today has filled me with so much hope and optimism. Education truly is the only way forward. Please join me and let's support TCF in its effort to break barriers through the power of education. Together, we can pave the way for a brighter future for our children. आप ही की वीडियोस में कहीं पे मैंने देखा था कि 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ जिसे कहते हैं, females are not able to afford education in Pakistan. How does TCF ensure that these girls get the education that they deserve? Because वो कहते हैं ना कि when you educate a female, एक औरत को जब आप पढ़ाते हैं तो आप एक पूरी नस्ल को जो है ना, ये जनरेशन को एजुकेट कर रहे हैं. मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगी कि TCF का फोकस बहुत लड़कियों पे होता है, एंड ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. इट्स अ वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो तमाम टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स हैं स्कूल्स में, देर फीमेल. When I said we are the largest employer of women in Pakistan, so our 15,000, almost 15,000 faculty of principals and teachers are women. The second is that we build schools in the heart of the community. जितना distance होता है एक लड़की के घर में और स्कूल में, her chances of dropping out increase. So we actually build schools in the heart of these communities. Third thing is that we, by design, हम लोग का स्कूल, we want to ensure that not in just a school but in each and every class we want to maintain a gender balance, 50% girls and 50% boys. Okay. When teachers are female, when the principal is female, when your school is in the heart, and when your principal and teachers are advocating for girls to come to school, when they get parents in their trust, then girls are more encouraged to come to school, parents are more encouraged to send their girls to school. जैसे आपने बताया कि स्कूल्स आप लोग उन्हीं एरियाज में बना रहे हैं, लाइक इट्स वेरी एट द हार्ट ऑफ मोहल्ला कह लें या गलियाँ कह लें, ठीक है ना, सो दैट पेरेंट्स आर कंफर्टेबल इन सेंडिंग बच्चियों को पढ़ाने के लिए. बट एक माइंडसेट है कि मुझे अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाना, फॉर एग्जांपल, राइट. होते हैं कंजर्वेटिव कुछ
is there any counseling that TCF does to convince the parents that your kids are in a safe environment and जो आप कर रहे हो, it's good for the future of their daughters? डेफिनेटली काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। लड़कियों के जब बात आती है, स्कूल जाती हैं तो शादी की बात आ जाती है, घर में हाथ बटाने की बात आ जाती है। सो एट दैट पॉइंट, स्पेशली व्हेन दे आर एट अ रिस्क ऑफ ड्रॉपिंग आउट, आवर प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स दे टॉक टू पेरेंट्स। कोविड में, जब कोविड हुआ था, स्कूल्स का लॉकडाउन हो गया था, बहुत पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पुल आउट कर लिया था स्कूल से। सो आवर टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स एक्चुअली वो घर से घर, door to door, they went speaking with them and counseling them. And there have been many instances जहाँ पेरेंट्स इस फेवर में थे कि वो लड़कियों की शादी करवा दें ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10 में, बट आवर प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स वर एबल टू कन्विंस कि वो मैट्रिक तक जाएं। किरत, मेरी बेटी, सब कहते हैं बिल्कुल मुझ पे गई है। आदतें भी मेरी जैसी ही हैं। रोज सुबह 5 बजे उठकर मैं घर संभालती और ये पानी के मटके। थकना तो जैसे हमें आता ही नहीं। दोनों ख्वाब देखती, बड़ी बड़ी आंखों में स्कूल जाने के ख्वाब, फिर दोनों ही आंखें बंद कर लेती। लोग सवाल जो करते थे, हमारी अम्मा ने हमें सर झुकाना सिखाया। और मैंने किरत, मेरी बेटी, मेरी जैसी बिल्कुल नहीं। अरे सकीना आपा, आप किरत से मिलने आई होंगी। किरत को बुलाइए। प्रिंसिपल मैडम, कभी सोचा भी नहीं था मेरी छोटी सी किरत यहाँ पढ़ लिख कर यहीं उस्तानी लग जाएगी। ये आप सबकी कोशिशों का नतीजा है। आप सबके लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। ये छोटा सा अतिया। For 30 years, the Citizens Foundation has been transforming the lives of underprivileged children through quality education. Support TCF with your zakat and help change lives. So Salman, before I go to my next question, right? How's the bun kebab? Bun kebab, very important question, and I'll take some time to answer. Bun kebab is amazing, but एक चीज़ को आप लोग मिस कर रहे हैं, जो कि मैं prove कर सकता हूँ, is the chai. I have drank all of it, and it is great chai. I would highly recommend the chai here. I would like to mention इनकी दूसरी चाय है। ये मेरी दूसरी चाय है। It's a really good tea. Yeah, इनकी चाय और bun kebab it's really It's very nice. Yeah. So the objective of TCF is that it aims to increase the number of schools and classrooms in underserved regions of Pakistan, जहाँ पे कम है schools, right? The numbers, mashallah, they speak for themselves. आपकी वेबसाइट से मैंने जो देखा है, 2033 school units, over 301,000 students enrolled, 63,000 graduates. Would you say that the mission, जो founders का एक vision था, mission था, जो objective है, is that going in the right direction? Oh, that's a great question. थोड़ा सा मैं इसमें context, I want to give context to everybody. In Pakistan, जैसे निका ने कहा 1.5 करोड़ लड़कियां बाहर हैं, there are 26.2 million children out of school. Now, what does that mean? I want to give your viewers an idea. That is the population of Australia. Whoa. So, as many people live in Australia are as many children out of school in Pakistan. And let's look at the region. Bangladesh, India, Afghanistan, that's not the case. We are the second highest out of school children country in the world.
It's not Bangladesh, it's not India, it's us. So we have to understand that it is such an important focus. So direction पे अब आते हैं. Why are we doing this is as simple as, I'll ask your viewers and maybe they can put in the comment section. Is there any other way to solve the crises or ills of Pakistan? We would love to hear them, definitely, except education. There is no other way. I'll take the example of Sweden, which is one of the happiest countries in the world. If you go 100 years ago, 1917, they started their education policy. In 1940, they were close to Egypt's GDP. And look at them now, just because they invest in education. So, और कोई तरीका नहीं है. There is no other way. Now, coming to the direction, I think, alhamdulillah, we are going well. आपने जो students का बात की, this is just one part of the program. हम लोग तकरीबन 2,25,000 अडल्ट एजुकेशन आगाही की ख़वातीनों से हम निकल चुके हैं, जिनको हम सिखाते हैं कि पढ़ना कैसे है, अडल्ट्स बेसिकली, बस पे कैसे जाना है एक जगह से, घर का बजट कैसे बनाना है, ख़त कैसे लिखना है. सो वो एक अलग 2.5 लाख है. फिर हमने हमारी जो किताबें, बिकॉज वी डिडंट हैव बुक्स व्हेन वी गॉट इनटू इट, दे वर नॉट क्वालिटी बुक्स इन पाकिस्तान टू. सो वी हैड अ होल प्रोसेस एंड बाय ईयर्स वी हैव मेड बुक्स एंड दोस बुक्स आर ओपन टू एनीबॉडी. हम कहते हैं गवर्नमेंट ने भी हमारी बुक्स ली हुई है. सो दैट्स नॉट द इम्पैक्ट दैट वी आर मेकिंग. वी वांट टू क्रिएट 2 million एजेंट्स ऑफ पॉजिटिव चेंज 2 million बाय 2030. 2 million by 2030. 2 million. और जब there will be enough agents of positive change in Pakistan, Pakistan will change. It might not happen in our life, maybe it will, but guaranteed if there are enough agents of positive change, Pakistan will become a better place. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा उमर और मैं हूँ गुडविल एम्बेसडर फॉर द सिटीजन्स फाउंडेशन. आज मैं TCF के एक स्कूल कैंपस में आई हूँ. अगर हम किसी से माजरत करेंगे तो कैसे करेंगे माजरत? अगर किसी चीज़ मुझसे टूट गई है तो मैं जाकर उसको सॉरी बोलूँगा और कहूँगा कि मुझसे गलती से टूटी, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए. स्टोरी टाइम में TCF की खुद की पब्लिश की हुई बुक्स में से एक स्टोरी पढ़कर बच्चों को सुनाना. जैसे हम जानते हैं कि स्टोरी जो है वो कदीम तदरीस का एक अमल है, तो इससे जो है हम बच्चों की मालूमात में इजाफा होता है और बच्चों की 3 स्किल्स हम इस तरह से इम्प्रूव कर रहे होते हैं. मतलब उनकी सुनना, समझना और उसको जो देखना. डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम जहां बच्चों को सिखाई जाती हैं 21st century skills on technology. TCF के तमाम सेकेंडरी स्कूल्स में हर बच्चा इन टैबलेट्स पर कंप्यूटर साइंस करिकुलम पर फोकस करते हुए कोडिंग और सॉफ्टवेयर सीखता है. यहाँ के बच्चों की क्रिएटिविटी जो आर्ट रूम की दीवारों पर सजी इन तस्वीरों में साफ दिखाई देती है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस, यहाँ के बच्चे जो कि TCF में दी जाने वाली तालीम के मयार का जीता जागता सबूत है. इनके ये मुस्कुराते चेहरे देखकर मेरे दिल में आने वाले वक्तों के लिए उम्मीद जाग उठी. मुझे पूरा यकीन है कि ये स्कूल और TCF के बाकी 2000 से ज़्यादा स्कूल यूनिट्स अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में पॉजिटिव चेंज लाने का बायस बनेंगे. आए इस मूवमेंट में TCF का साथ दें. There are different tiers, different modes of donations to the TCF Foundation. How can people contribute? I'm sure viewers देख रहे हैं हमें. They would want to be, like contributing in some shape or some way, whatever way people can, like help this, because again, it's a joint community effort, right? Again, going back to Kulachi and for providing us this platform, that's their part. They're doing their part, right? Into Spices Max is covering this, raising awareness about this. Put in whatever efforts that you can. थोड़ा करके भी करेंगे तो like it's helping somebody, some kid somewhere. जिस तरह आपने बताया, could be कोई सलीम साहब के बच्चे हों जिनका कुछ फ़ायदा हो जाए. I think आप लोग ज़कात वगैरह भी accept करते हैं. How does that all work? Thank you for asking that question. TCF does accept zakat and sadaqah in all forms of donation. To support a child, it's just $13 or 18 Canadian dollars. It's just equal to just dropping 3 cups of Tim Hortons, honestly. And you go on our website and you can sign up for adopting or supporting a child's education. And आप हमारी website पे जाएं tcfcanada.org or tcfusa.org and you can sign up for supporting our children. All these details are in the description box, in the pinned comment as well. इनकी website पे भी है. I'll put on the
the links in the description box. But the amount that you said for sponsoring a kid, is that monthly? Is that annual? How does it monthly. work? It's monthly. $18 a month. 18 Canadian dollars a month. Okay. Yes. And is there like higher tier packages or something? Because again, I'm sure there's a lot of, like people in the restaurant industry जो हमारे माशाल्लाह channel को भी follow करते हैं. If they want to, like sponsor, let's say a school or a classroom or something, is that even possible? Ji, thank you for that question. Bilkul, we have more options as well. You can take a whole child from KG to metric. You can also support a classroom, which has around average 30 children, and the cost for that is $4,000 a year, USD, 5,700 Canadian. जहाँ you can own that class कि ये class 5 भी मेरी class है, आपका एक flag भी लग जाएगा. You can dedicate your memory of a loved one. We have such great donors in Canada and USA. उन्होंने पूरा school बनाया है. So we have donors from supporting a child to building a school everywhere. It's not just about education, it's about quality education. तो उस पे बड़ा focus है हमारे teachers का, हमारे जो warriors हैं, front end है, वो हमारे principals और teachers हैं. हम तो यहाँ बैठ के मेरा निका तो बातें कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं. Actual जो fighters हैं, जो हमारे heroes हैं, वो sheroes हमारे जो हैं, वो हमारी principals और teachers हैं. And it's amazing that TCF is kind of working towards that women empowerment, giving like women a platform. Just आपने बताया कि teachers, principal, management is mainly female staff, right? Yes. So that's really good as well. जी, बल्कि आपको मैं बताऊँ UTCF नॉर्थ अमेरिका में सिवाय मेरे और शायद एक आध दो एम्प्लॉइज़ के अल्हम्दुलिल्लाह सारी एम्प्लॉइज़ ख़वातीन हैं. So उसका फ़ायदा ये है कि हमारी जो attention to detail और excellence in work है, that is next level because of the women. आपने हमारी tagline ले ली, #next level. So काफ़ी सारे celebrities हैं who are kind of like part of this movement. They have endorsed TCF. So let's have a look at what some of our legends have to say about TCF. Till then, समोसे जो है आपको देख रहे हैं सलमान साहब जी, अनिका जी थोड़ा सा समोसे मैंने अभी मत हार दिया तो मैं और खा रही हूँ बहुत मजे का. Assalamu alaikum. My name is Mahira Khan. This Ramzan I urge all of you to make a difference by enriching a child's life through the gift of education. Contribute your zakat to TCF so that we can secure as many children's bright futures as possible. So what would you like to say to people regarding clarity, regarding like where your money is actually going? Thank you for bringing up this question. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, I'm so happy to share that TCF Canada is one of the top 10 impact charities here. Wow. So there are 86,000 charities in Canada, and 800 apply for this honor or award, you can say, through Charity Intelligence. And TCF is one of the top 10. I think we might be the only Pakistani charity who gets this award. And we've gotten this award for 5 consecutive years. TCF USA में होता है Charity Navigator की ratings होती हैं, and TCF USA is a 5-star charity. If you go on either of the websites, our financials are on the website. We are audited by professional organizations, and you'll see that we're quite transparent with everything, and हमारे सारे financials audited and submitted to public हैं. I would again urge and appeal to the people कि financials भी देखें, बट जाके काम भी देखें. जब भी पाकिस्तान जाए सिर्फ हमें 3 घंटे रिक्वेस्ट करें लोग, go and see the school. That is where the magic happens, and that's where when we have people going to school, then they are completely convinced about the impact that TCF is making in the lives of the children of Pakistan. और मैं आपको भी बल्कि आपके viewers को और आपको invite करूँगा कि next time you go to Pakistan, please give us the opportunity of taking you to a school, and then you can record all of this yourself. You actually read my mind. मैं अभी जो है ना दिमाग में वही सोच रहा था कि मैं जाऊँगा वहाँ पे, and जो next vlog इंशाल्लाह हम लोग करेंगे will be on ground, because I would love to visit, and I would love to take my audience behind, like to see on the ground कि जिस तरह आपने बात की कि how is the magic happening, how are life being transformed, and like the impact that TCF is having. That would be wonderful. Please do visit us. So एक follow-up question. Fine, you're giving children a platform कि वो पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है? Is TCF also supporting them and integrating them into the society? Because there are children who are coming in from less fortunate, backgrounds, correct? Opening up doors for them in executive offices, banks, hospitals, etc. बहुत अच्छा सवाल है, and I appreciate the empathy that you put in that question as well.
ऑफ कोर्स जब ये बच्चे TCF के स्कूलों से निकलते हैं, बिकॉज TCF के स्कूल तो उनकी अपनी कम्युनिटी में होते हैं, as soon as they step out and they go into colleges and universities, they get a cultural shock because they're out of their community, and then they're working and they're studying with children from all backgrounds. जो हमारे बच्चे for example IBA जाते हैं, they are with students from जो Cambridge background A level से बच्चे निकल के आते हैं. They do struggle and we have counseling sessions. We have an alumni pathways team जो वहाँ बैठी हुई है. We have a call center जो इन बच्चों को mentoring कर रहा है, इनकी counseling कर रहा है. And then of course we have MOUs with these universities. We have MOUs with some organizations as well. ना पहले जब हमारा विजन था कि यार सड़कों से इन बच्चों को उठाओ, इनको पढ़ाई तो करा दो, कम से कम मैट्रिक करा दो, बट आज हम ही उन्हीं बच्चों को, जैसे अनिका ने कहा, सपोर्ट भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला दिलवा रहे हैं, फाइनेंशियल एड कर रहे हैं. सो हमारा बहुत बड़ा एक फोकस शिफ्ट हो रहा है कि हमारे बच्चे जो निकले हैं इनको आगे भी जाना है. लेकिन जो बच्चे एज्यूम करें कि आगे नहीं भी जाते, उनके लिए भी वोकेशनल साइड पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. बिकॉज एक दफ़ा जब आप 10वीं 11वीं जमात तक पढ़ लेते हैं तो आपका एक तरीके का आपके अंदर एक सेंस आ जाता है. सो इवन इफ़ यू आर जॉइनिंग अ फादर्स बिजनेस, यू कैन डू इट अ वेरी डिफरेंट वे. आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी कहीं और चेंज आनी है अगर आप थोड़ा से पढ़े लिखे हैं. सो सिर्फ ये इम्पैक्ट वो नहीं है कि जो हमारे बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन गए, लेकिन जो बच्चे या इवन हमारी जो लड़कियां हैं, अगर एज्यूम करें थोड़ी बार शादी हो जाती है, द वे दे मैनेज देयर हाउस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम समबडी हू मैनेज हाइजीन. फॉर एग्जाम्पल, एक वालदा ने एक दफ़ा कहा कि मेरी बच्ची स्कूल से आती है, मुझे दांत साफ़ करवाने में मजबूर कर दिया. वो मैं जब दांत साफ़ नहीं करता उससे बात नहीं करती. अच्छा, जब कोई एजुकेटेड होंगी ना खातून, वो अपने बच्चों को 100% एजुकेट करवाएंगी. बिकॉज इफ़ शी इज़ एजुकेटेड, शी नोज़ द पावर ऑफ एजुकेशन. सो इम्पैक्ट बहुत रिपल इफेक्ट पे बहुत बड़ा होता है, जो कि अक्सर आप टैबुलेट भी नहीं कर सकते. और थोड़ी सी और ट्रैजेक्टरी चेंज करेंगे ना, अगली जनरेशन की एक और चेंज हो जाएगी, उसकी अगली जनरेशन की एक और चेंज हो जाएगी. And again, we say that's the only way Pakistan can change. It's like a chain reaction basically, right? बिल्कुल So ऐसे ही है. it's beautiful जो आप लोगों का मिशन है, जो TCF का मिशन है, and from all of us at Into Spices, जो हमारी पूरी फैमिली है, our YouTube family, we wish you the very best of luck. कुछ in the end कुछ कहना चाहेंगे? I would just say कि रमज़ान का महीना आने वाला है. Please do think about TCF. Consider us when you make your decisions for zakat and sadqa. उसके अलावा डू हेल्प अस स्प्रेड द वर्ड. जितने लोगों के पास TCF का मैसेज पहुंचेगा, उतने बच्चे स्कूल जाएंगे. सो प्लीज़ कीप द मैसेज अलाइव, कीप इट स्प्रेडिंग. Exactly what Anika said. In addition, we just want to thank Kolachian for doing this. Thank you, so most important, for giving us the platform, and your team for giving us the platform. And it's people like you who keep our energy going, that there is definitely a lot more to do. So thank you for inviting us. And most importantly, मुझे बन कबाब रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा है. I want to pack a few for my husband and child and take it home. Sure. I'm sure we can manage that. In the end, what I would like to say is that we all need to come together as a community. यही हमारा एक vision था when we started Into Spices, to bring the community together. And बड़ा मज़ा आया आप लोगों के साथ बैठ के आज and talking to both of you, Salman साहब, Anika ji, because again, it's all about giving a platform to voices that need to be heard, stories that need to be told. So that was our mission, and bada maza aa raha hai. Thank you so much. Playing a small role in whatever way we can to promote and spread this word. Thank you so much. So until next time, viewers, stay tuned to Into Spices Max, and remember to inspire, empower, and transform. Allah Nikeban.